Okay, so in this video, I will be discussing two more features of bonds. Number one, I will discuss callable bonds. Callable bonds are those bonds that give the issuer the right to call back the bonds before its maturity. So, the right to call back the bond is with the issuer. In our example, that means that the right to call back the bond is with the corporation. कॉरपोरेशन ने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, यानी कि आपसे पैसे पे लोन लिया हुआ है. So the callable bond gives the option to the corporation that if they want, they can end the bond before its maturity. Let's say उन्होंने बॉन्ड इशू किया हुआ है 10 years का in total. So the total maturity of the bond is 10 years. But they might decide that after 5 years they are going to call back the bond. उन्होंने बॉन्ड को कॉल बैक कर दिया, इसका मतलब है वो यहीं पे आपको आपकी पार वैल्यू वापस कर देंगे. एंड वंस दे गिव यू द पार वैल्यू बैक, द बॉन्ड विल सीज टू एग्जिस्ट. यानी कि जो ओरिजिनल मेच्योरिटी बॉन्ड की 10 years की थी, if the corporation wants, they can end the maturity before time. They can even end it in 5 years, they can even end it at 6 years, 7 years. उनकी मर्ज़ी है कि वो कब बॉन्ड को ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं. Now the question is, why would a corporation call back its bond before maturity? क्यों करेंगे वो ऐसा? उन्होंने अगर बॉन्ड इशू किया था 10 years के लिए, what changed in the market that they decided that they will call back the bond before its maturity? Remember, in bonds the most important thing is the interest rate. So let's assume कि उन्होंने जो बॉन्ड इशू किया हुआ है मार्केट पे, उस पर उन्होंने कूपन रेट देना है 15% का. At that time when they issued the bond, everybody in the market had issued at the 15% rate as well. उन्होंने मार्केट के रेट पे इशू किया था, तो बॉन्ड पार वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा. बट नाउ विद टाइम द मार्केट इंटरेस्ट रेट माइट फ्लक्चुएट. इट माइट बी पॉसिबल कि जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो अब हो गया हो 10%. Now understand from the corporation's point of view. For corporation, coupon rate is an expense, it is an interest payment. तो corporation को 15% के हिसाब से ही पेमेंट देनी होगी for the next 10 years, whereas market का interest rate 5 साल के बाद ही 10 years के ऊपर चला गया है. Sorry, 10% के ऊपर चला गया 5 साल के बाद ही. So doesn't it make sense that the corporation ends the bond, जो उनका current bond है वो उसको ख़त्म करें, बिकॉज वो 15% की उनको एक्सपेंस पड़ रही है. एंड दिस बॉन्ड एंड इशू अ न्यू बॉन्ड एट दी 10% रेट. इस बॉन्ड को वो ख़त्म कर देंगे, पार वैल्यू वापस कर देंगे 15% के हिसाब से, अब उन्हें पेमेंट नहीं देनी होगी. एंड दे आर गोइंग टू इशू अ न्यू बॉन्ड एट दी 10% रेट. वंस दे इशू इट एट दी 10% रेट, अब उनको 10% के हिसाब से पेमेंट करनी होगी. सो वेन एवर द मार्केट interest rate, whenever the market interest rate in the economy goes down, it is likely that the corporation will call back their bond. ठीक है, because again let's go to the example. 15% के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है 10% में, सो दे कैन एंड दी 15% बॉन्ड एंड दे कैन री इशू एट दी 10% रेट. तो उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा ये करने से. एंड वेन एवर दे सी एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो, दे विल डू इट. ये जो हमने बात की है ना कि 15% वाले बॉन्ड को ख़त्म करके दे विल इशू एट दी 10% रेट, दिस इज़ कॉल्ड द रीफंडिंग ऑपरेशन. They are ending one bond and they are issuing a new bond at the lower interest rate. इसको आप refunding operation कहते हैं. Okay, so we are done with this much. Now there is one more thing in
callable bonds. One more feature in callable bonds, that is that the bonds might have a deferred call period. This means that for some time period, it might not be possible for the corporation to call back the bond. Okay, let's look at our example of 10 years once again. इट माइट बी पॉसिबल कि वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक लिमिटेशन है. दे कैन नॉट कॉल बैक द बॉन्ड्स फॉर द फर्स्ट 2 years. आफ्टर द सेकेंड ईयर दे आर अलाउड टू call back the bond. So they can call back it in year 4, they can call back it in year 3, लेकिन जब तक बॉन्ड को 2 साल पूरे नहीं होते वो उसे कॉल बैक नहीं कर सकते. This clause is added for the investors protection. यानी कि इन्वेस्टर को कुछ तो गारंटी हो कि कुछ अरसे तक तो कम से कम वो बॉन्ड कॉल बैक नहीं होगा, वरना ऐसे तो कॉरपोरेशन विल कीप ऑन प्लेइंग. बॉन्ड इशू किया, इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे गए, नया बॉन्ड इशू कर दिया और वो वाला ख़त्म कर दिया. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर शुड नो कि मिनिमम कितने अरसे तक वो बॉन्ड कॉल बैक नहीं होगा. अगेन इट कैन बी एनी टाइम पीरियड, जैसे कि अगर 20 ईयर्स का बॉन्ड है, हो सकता है 10 ईयर्स कैन बी दी डेफर्ड कॉल पीरियड. सो 10 साल तक बॉन्ड कॉल बैक नहीं हो सकता, एंड आफ्टर द 10th ईयर इट कैन बी कॉल्ड बैक. Another thing in this is the call premium. The concept of call premium is that because the corporation is ending the bond before its maturity, they will have to pay a penalty on the payment. So instead of giving just the par value, they will have to give an amount of par value plus premium. सो लेट्स अगेन एज्यूम कि टोटल 10 years का बॉन्ड था, लेकिन 5 years के बाद ही वो उसे कॉल बैक कर रहे हैं ना, बिकॉज दे आर एंडिंग इट बिफोर इट्स टाइम पीरियड. वो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट ख़राब कर रहे हैं. दे विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑन इट. इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग 1000 par value, they might have to give a premium on it. Now the premium is usually 1 year's extra interest payment. So let's say अगर कूपन पेमेंट 100 है, तो ईयर 5 में वो 100 की कूपन पेमेंट भी देंगे और 100 की पेनल्टी भी पे करेंगे. ठीक है, दिस अमाउंट कैन बी समथिंग एल्स एज वेल. ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन यूजुअली 1 साल का इंटरेस्ट ही कॉल प्रीमियम होता है. सो दिस वाज वन टाइप ऑफ बॉन्ड फीचर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फीचर, विच इज़ योर puttable bond. Now, puttable bond is the opposite of callable bond. Instead of having the option to call back the bond, now you're giving the option to the investor that they can ask for their investment back before its maturity. Callable bond, remember, the option is with the issuing corporation. In puttable bond, the option is with the investor, which means that if the investor wants, they can end the bond before its maturity. Now investor के ऊपर usually penalty नहीं लगती है, because it is their money, they can take it back any time they want. यानी कि अगर investor को let's say पैसे की ज़रूरत है, उसने एक bond purchase किया हुआ है 10 years का, 5 साल बाद ही कुछ होता है कि उनको पैसों की ज़रूरत है, they can simply go return the bond and get the par value back, and the bond will cease to exist for them. ठीक है, कॉरपोरेशन के पास वो बॉन्ड वापस आ जाएगा. कॉरपोरेशन की मर्जी है वो उस बॉन्ड के साथ जो करे, किसी और को सेल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं. सो पुटेबल बॉन्ड गिव्स द राइट टू द इन्वेस्टर टू एंड द बॉन्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी. Now again you need to think, when will the investor exercise this bond? The investor will exercise this bond when the coupon rate goes up or when it goes down. That is the question over here. So let's take an example. Investor ने investment की हुई है at the 10% rate. Let's say this is the coupon rate. और पूरी इकॉनमी के अंदर मार्केट का इंटरेस्ट रेट 5 साल के बाद चला जाता है 15% पे.
So the investor will still get the 10% interest rate for the next 5 years as well. ठीक है, but if they use their puttable option and they return back their bond, वो चाहे तो अपना बॉन्ड में से पैसे निकाल लें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, and they can invest at the 15% rate. So next 5 years and they will get the 15% interest rate. So puttable bonds are exercised when the market interest rate goes up. ठीक है, this is important to remember that puttable bonds are exercised when the market interest rate goes up. आप अपने ऊपर ये एग्जाम्पल ले लें, आपने 10 लाख रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई और वहाँ से आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. फिर आपको पता चल रहा है कि दूसरे बॉन्ड्स आना शुरू हो गए मार्केट में दैट आर ऑफरिंग यू अ 15% इंटरेस्ट रेट. आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि 10% वाले से अपने पैसे बाहर निकालो और 15% वाले में इन्वेस्टमेंट कर दो. ठीक है, so whenever the market interest rate goes up, the puttable bond will be exercised. So I'll just summarize now what we have done. We have discussed two important features. One is callable bonds and the other is puttable bonds. The callable bond can be exercised by the issuer of the bond and the puttable bond can be exercised by the investor. एक्सरसाइज कॉलेबल बॉन्ड तब होगा जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा एंड पुटेबल बॉन्ड विल बी एक्सरसाइज व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट गोज़ अप.